पीपल, इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर हम बहुत से टॉप एमएनसीज के प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि गूगल, जैसे कि नेटफ्लिक्स, जैसे कि अडोबी और आज तक की टॉप नॉच जैसे कि अमेजॉन। तो अगर आपको इनमें से किसी भी कंपनी से प्यार है या नहीं भी है, तब भी चैनल को जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर हम हर लेवल के, हर टाइप के, हर एमएनसी के या नॉन एमएनसी के, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप जानोगे कि कैसे हर एक वेबसाइट को जुडिशियसली यूज करना है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। अगर आप एमएनसीज की तैयारी कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। बट इन डिफरेंट वेबसाइट्स के बीच में डिफरेंस कैसे पता करें, इन डिफरेंट वेबसाइट्स को कैसे यूज करना है, किन क्वेश्चन के लिए कौन सी वेबसाइट ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अच्छी है, ज्यादा टेस्ट केसेस के साथ है, इन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है इस चैनल पर। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो एंड हर वीडियो को पूरा देखना और किसी भी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियो के एंड में आपको मिलने वाली है एक बोनस टिप, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। वेदर आप टेक्निकल रोल्स के लिए अप्लाई करो, वेदर नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करो, क्योंकि ये जनरल प्लस प्रोग्रामिंग के भी टिप्स होंगे, कैसे एक प्रॉब्लम को या कैसे इंटरव्यू में आपको बिहेव करना चाहिए। तो अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब करा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अब टाइम वेस्ट करे बिना आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम क्या नया देखने वाले हैं और आज की बोनस टिप आपको क्या मिलने वाली है। तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्ट आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का क्वेश्चन जो कि आया है सीधा इंटरनेशनल फोरम से हमारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर, दैट इज longest zigzag path in a binary tree. Longest zigzag path in a binary tree. There are 2 and 3 coin terms that are being said in this statement, which is first the zigzag, second the path, and third is the binary tree. Those who are not too much familiar with the programming and wants to know about what is binary tree and what data structure it's all about, so we all know a tree. A tree is said to be a binary tree when it has only 2 children. Okay, so let's say this is my root. Now this is my root. Let's wait. Yeah, so let's say this is my root. So now if it has only 2 children, then it is a binary tree. Okay, this is my root, and this is, if I need to refer this part, it will be my root left and this will be my root right. Okay, so this is how I can reference. If I have the address and node of this, then I can refer these things. This is today's POTD problem of the day as well on Leetcode. It's a category medium. Although if you are like clear with the concepts, I don't think so that will lie in the medium, because you will straightforward think about what solution or what approach you are going to use up here. Okay, so first let's start. So when we have, so a tree is said to be a binary tree when at most it has only two children. If it has more than 2 children, then it's not a binary tree, then it's an n-array tree. What is it? N-array tree. Okay, bi is for basically here too. If you have 3 children, tri. If you have 4 children, quad. But above then, like more than 2, we say it is an n-array tree, which can have any number of nodes. Okay, so this is the definition of the binary tree. Now the zigzag path. Zigzag path is, let's say you have a tree here, then this one, then this one, and then this. Okay, so if you have a tree, something kind of this, then what will be a zigzag path? So from starting from here, the zigzag path will be from here, you will go here, and then this, and then this. So now here 1, this is your 1, this is your 2, and this is your 3. So longest zigzag path means the length of the zigzag path is 3 in this case. What it is? It is 3 in this case. This is something that we need to find out. Okay.
So, firstly, the relevance of this question, like without the relevance, nobody does anything. We have already discussed this. So, the relevance of this question is in the past 3 months, this question has been asked more than 15 plus times in different companies, in different organizations, and in different forms. The question or the gist remains to be the same, but the variation differs. Let's say sometimes they have asked about, okay, what is the binary tree and how to find the zigzag path on it. Okay, and a similar kind of variance you can expect basically. So, firstly, they will ask, okay, find the longest zigzag path. Now, you will ask the clarifying question, or the question should be from your side where we need to find the zigzag path, because it could be in a tree, it could be anywhere. Okay, it could be in a tree, it could be in a graph, it could be at any place. Okay, so basically, this will be your clarifying question. If you have just given this like longest zigzag path, then you should ask, okay, where I need to find the longest zigzag path. तो गाइस मैंने थोड़ा सा क्लीन आउट कर दिया है ये काफ़ी मैसी हो रहा था. सो नाउ हमने रेलेवेंस डिस्कस कर ली है हर चीज़ की. सो लेट्स डिस्कस अपॉन व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग टू अस. तो डिस्क्रिप्शन रीड करते हैं इसकी. लॉन्गेस्ट zigzag path in a binary tree. You are given the root of the binary tree. A zigzag path for a binary tree is defined as follows. Okay, तो यहाँ से अगर तुम्हें zigzag path नहीं पता है कि क्या होता है, आई शुड से यहाँ से नॉलेज मिलनी शुरू हो जाती है क्वेश्चन में. पर अगर तुमको इंटरव्यू में भी इस तरीके से आता है लाइक सिर्फ zigzag path एंड यू आर नॉट क्लियर विद इट, जस्ट आस्क विद इट. नेवर थिंक अबाउट कि मेरा ये क्वेश्चन स्टूपिड क्वेश्चन हो सकता है तो मैं इसे नहीं पूछ रहा. नहीं, ऐसा कभी मत करना. कोई भी क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होता. यू शुड गो फॉर इट, यू शुड आस्क फॉर इट. दिस विल शो दैट यू आर अवेयर और तुम में पूछने का डर नहीं है. ठीक है, जो कि बहुत सारे जनों में होता है. यू आर नॉट अमंग लाइक you are not from the crowd, you are different from them. Okay, so this will make you different. You are given the root of the binary tree. A zigzag path for a binary tree is defined as follows. Choose any node in the binary tree and a direction, right or left. If the current direction is right, move to the right of the current node, otherwise move to the left child. Change the direction from right to left from left to right. So it means basically zigzag इधर 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 इधर. और अगर उल्टा चल रहा है तो अगर ऐसा है तो ये. सो बेसिकली अपने को निकालना zigzag पाथ ही है. ठीक है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से अपने को निकालना है यहाँ पर. और क्या कह रहा है, चेंज द डायरेक्शन कर सकते हैं. रिपीट द सेकेंड एंड थर्ड स्टेप. सो दिस वर द फर्स्ट एंड सेकेंड. इफ द करंट डायरेक्शन इज राइट and change the direction from left to right. Repeat until you cannot move in the tree. Zigzag length is defined as the number of nodes visited minus of 1. Okay, and return the longest zigzag path contained in the tree. So अब इसका एक एग्जाम्पल देखो. जो अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था वही हमारा इनपुट एंड आउटपुट है बेसिकली यहाँ पे. तो वी हैव अ ट्री लाइक दिस. And let's consider some dummy data. So 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay. Now zigzag length is defined as the number of nodes visited minus of 1. So the longest zigzag path here is this one. 1, 2, and 3. Nodes are visited 4 minus of 1 which is equals to 3. ठीक है. अब इसमें ये कंडीशन क्या कह रही है, जब तक हम ट्री में से आगे नहीं मूव कर सकते, जैसे कि मैं 2 से आगे नहीं बढ़ सकती या मैं 5 से आगे नहीं बढ़ सकती, वहाँ पर वील ब्रेक. जहाँ आगे बढ़ सकते हैं वहाँ हम बढ़ेंगे. ओके, तो ये थी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन. अब फर्स्ट अप्रोच एंड द फॉरमोस्ट इज दैट हियर वी नीड टू फाइंड आउट. जो आपका सोचने का प्रोसेस होना चाहिए दैट शुड बी कि अपने को यहाँ पर लॉन्गेस्ट पाथ निकालना. और लॉन्गेस्ट पाथ हमें तब मिलेगा जब हम लाइक सबसे डीप जाएंगे. ओके, लाइक हमें सबसे डीप जाना है विद रिस्पेक्ट टू ट्री. ट्री के अंदर हमको लास्ट नोड तक जाना है. लास्ट नोड, अब ग्राफ थोड़ा सा याद करो तो ग्राफ में लास्ट तक जाने के लिए हमारी क्या अप्रोच होती है, डीएफएस. तो वही डीएफएस का मॉडिफाइड वर्जन वी विल यूज इन दिस क्वेश्चन टू सॉल्व दिस. वेयर व्हाट इज इट इज डूइंग, वी विल कॉल द डीएफएस ऑन लेफ्ट एंड ऑन राइट. लेफ्ट और राइट दोनों पर कॉल करेंगे हमारे पेरेंट फंक्शन से. सो दिस इज माई पेरेंट फंक्शन. पेरेंट फंक्शन के अंदर लेफ्ट और राइट
पर मैंने फंक्शन को कॉल करा विच इज नॉट माई पेरेंट फंक्शन, इट विल बी माई चाइल्ड फंक्शन। एक बार लेफ्ट के लिए कॉल करा है एंड एक बार राइट के लिए कॉल करा है। अब इस चाइल्ड फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल पाथ भी आएगा, ठीक है, जो हमारा करंट काउंट मेंटेन करके रखेगा कि हमारा मैक्सिमम लाइक अभी हम कितने स्टेप्स पर पहुंचे हैं, और एक वेरिएबल जो है ग्लोबल वेरिएबल होगा विच विल बी आवर मैक्स लेंथ, जो कि हमें ये बताएगा कि हमारी मैक्सिमम अभी तक लेंथ हुई क्या है, ठीक है, और उसका पैरामीटर हम यहाँ पास करेंगे। ये पैरामीटर हमें इस फंक्शन में पास करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इस पैरामीटर को हमें अकॉर्डिंग टू द फंक्शन जिस जिस नोड पर विजिट कर रहे हैं वहाँ चेंज करना है। अदरवाइज अगर कुछ नॉर्मल होता कि एट द एंड में कोई वैल्यू निकल जाएगी, तब हम नॉर्मल जा सकते थे, तब हम इसे यूज ना नहीं करते, ठीक है। पर यहाँ फंक्शन में पास करने का द मेन रेलेवेंस इज दैट वी नीड टू इंक्रीमेंट दिस वेरिएबल्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू दी कॉलिंग्स, according to the functions call that we are making. Okay, so this is the thing. So here we'll pass some variable which will be incremented like every time +1 when it will be called inside this function. In this function first and the base root case check is because recursion approach is this we are using. If root is equals null, then we will simply return from here. Okay, then in which direction we need to go. If we are going in right, we need to change it to left, and if we are going it to left, then we need to change it to the right. Okay, so we'll check basically here, if let's say go left or go right, we can take any boolean variable. If go left is true, then we will call go left by passing the value like child function. We'll call the child function by passing the negative value like opposite value. So if it is positive, we will pass not go left in this function, that we need not to go in left means that we need to go in right, and we'll increment the step whatever it is, and before this if and else check whether to go in left direction or right direction, here we will be calculating, and here we will be basically maintaining the count of our maximum length achieved till now. Okay, आई गेस थोड़ा सा ही अभी डाइसी लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, पर लेट्स राइट इट डाउन एंड आई थिंक उसके बाद द थिंग्स विल बी मोर क्लियरर, एंड व्हेन वी विल कोड देन यू विल सी लाइक हाउ सिंपल द कोड वाज, बट it doesn't appears to be, because that is something that many people have faced when they have saw this question for the first time, that this question looks easy, but how to derive at that easy was difficult basically. So the solution for this could be, we will create a child function which will be called on both the left and right child of the root from the parent function. Inside the child function, we will first check out for the base case, which is if root is equals null. Okay, so we will check out for this base case, which is if root is equals null, and if it is not, if it is, then we will simply return it, and if not, then we will check for the steps and max length. Okay, we will check out for the steps and max length. Initially, the steps for both the cases will be 0 except the direction in which we are planning to start our zigzag path. So this basically is trying to say that
if we are going in left direction and if we are taking that, okay, I need to start my path from the left direction, then my step will be 1, otherwise it will be 0. Okay, inside the function, if we have checked for the steps and the max length, right? Now we will check for the direction and then call the parent and then call the child function on the child of the current node with values with incrementing steps. ओके, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन को कॉल करेंगे, चाइल्ड को स्टेप्स बढ़ा देंगे, अगर लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट का स्टेप बढ़ाएंगे, अगर राइट में जाना है तो राइट का स्टेप बढ़ाएंगे. So I guess the explanation is clear to you. If not, do mention in the comment section and I'll check it out and try to respond as soon as possible. And now when we are done with this, let's move on to the most exciting part of the video, which is the coding section. And there also we'll try to understand what this question is about to say once again, if anything is still not clear to you. Okay, so this is 1372 medium level question on the Leetcode platform with longest zigzag path in a binary tree. You're given the root as zigzag path. This we all have understood. Let's understand this from an example. So here the longest zigzag path is 1, 2 and 3. Okay, root left, right, like right, left and right. Similar to the other case, when this is the data structure, then 1, 2, 3 and 4. Okay, and when we only have this root basically, so then there will be nothing, so it was 0. Okay, so now let's try coding it out. So we'll take this variable int max length is equals to 0, basically to maintain the count of the maximum length that we have achieved till now. And then we will call zigzag function on root left, where if we want to go in this left direction first, then it will be true and with the steps 0, and the step will be 0 only if zigzag root left, root right and a false and 0. Okay, and here basically from this we will return max length. So now here what we need to do is void zigzag, okay, tree node pointer node boolean or bool is left, and then what we will take is int steps. Okay, means at which step we are and where we need to go from this. Okay, so if node is equals null, then we will basically simply return from this. Otherwise, max length is equals to max of max length comma steps initially. Okay, now if is left, then what we will do, zigzag. If is left is true, means we need to go in the left direction, then we will call node left. Okay, now it will be false and steps plus 1, and then we will call this on zigzag node right true and step will be 1 in this case. Else zigzag, okay, node left, it will be true, steps it will be 1 initially, and then zigzag node right, this will be false. Now we need to change the direction and increment the steps. Okay, so
आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर. सो अगर हम लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तब हमें डायरेक्शन चेंज करनी है, और अगर हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तब भी हमें डायरेक्शन चेंज करनी है. तो सिर्फ वही काम यहाँ पर ट्रू और फॉल्स यहाँ पर ये कर रहे हैं. ओके, लेट्स ट्राई इट. ओके, आई थिंक आई हैव मिस्ड समथिंग. Output is 2 means it is not considering. Okay. If we are calling it from the first, let me check it out. If we are calling it from the first, then it should go in that way. And if it is going, okay, where I get. Okay guys, so there were some of the alterations in which I was like mistaking them. So firstly, we will call these two functions on the root only, not on the left and right. And on the basis of these values, we will check it out. Now, basic thing is like this function, we are calling it for the left child. So when we are already going to the left, then we should not go again in the left, we should go in right. That's why we are passing the value false here. And when we are going on right direction, basically, then we should now go to the left direction because we are checking there is left. So now we should go to the left direction. So that's why we are passing it true. And then I have tried submitting out and all the test cases are passing. Let me try it again. By the submitting of the last question that I like my last statement I mentioned, that submitting was to run it, basically to test all the test cases that are currently available. And these are passing. So let's now try submitting it. Golden coin spin, nice. And the efficiency is 68.12 and 63.41. Space complexity is not really bad because we actually hadn't like used anything. This is basically just the space call that is used in the recursion. अपनी side से अपने solution से कुछ ज़्यादा use नहीं करा है, so we will not consider that here. But let's try it out. 68. Okay, now it's 86. So you know, like the space complexity is 85.89, which is the highest. Okay, so we will consider that. With respect to the time complexity also, 86.76% was the highest. How now? Because why I was like doing it again and again, why I was submitting it again and again, because the solution complexity, if we analyze it now, apart from the recursion or anything, it is just O of n, but still it was coming so high. The time complexity was coming so high. That's why I was trying to like submit it again and again. And now considering this part, whatever we have solved till now, it is 8.6 out of 10. So guys, congratulations, we have solved this question with the nice time complexity and with the great solution. So अगर अब तुमको कहीं पे भी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन दिखता है, now you are able to do it. और 8.6, it's like more than 50, 60%, 60%, 70% वाला पास होता है. So you are above than them all. So congratulations. And yeah, अगर आज की वीडियो let me just erase it. Yeah, तो पैक करो अपनी बैग्स पे. We have solved this. Although this question pretends to be easy, but it was not. You must have seen because I also made some little but logical mistakes. Although if you are able to correct them on your own in the interviews also, then it's perfectly fine. Okay, interviewer will only give you the hints. Okay, this could be the reason why your solution is not working. But if you are able to correct it on your own, okay, then no problem at all. You are clearing that interview, and whatever marks the interview is going to give you, it's purely what you are deserving. Okay, अगर तुमने खुद से करेक्ट कर लिया है, इंटरव्यूअर की पूरी हेल्प नहीं ली है, अच्छे तरीके से हेल्प नहीं ली है, डायरेक्टली उससे पूछ नहीं लिया है कि इसमें क्या करना है, तब तक के लिए तुम लोग सही हो. लाइक नंबर नहीं कटेगा कहीं पर भी. लेकिन अगर कुछ पूछा है लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी, ओके, देयर इज अ पॉइंट कि हम कहाँ तक इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं और उसके बाद हमें नहीं पूछना चाहिए. ओके, सो एक पॉइंट रहता है ऐसा, उस पॉइंट की एनालिसिस तुम्हें इंटरव्यू में बैठकर खुद ही हो जानी चाहिए कि अब मुझे पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए. अदरवाइज इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाकर बात कर सकते हैं. पर या 8.6 आया है तो क्लियर है तुम्हारा इंटरव्यू. और अगर आज का क्वेश्चन अच्छा लगा हो, आज का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, so do not forget to like, share and subscribe the channel. Share this channel with your friends guys, because sharing education is really a good deed. And yeah, take care. If you have any questions, do mention in the comment section and I'll try to see them and respond as soon as possible.
And yeah, at the end of the video, I would like to say you all stay safe, stay healthy. Bye.